कुछ होता है ना उनमें, और Yeah. एक और ही चीज, Yeah, yeah, अगेन इट्स द पैशन. Yeah. if I think वो एक, I think it's also in our religion, एक जज्बा होता है. I think it's not even a religion, I think it's just a human thing, the human spirit. Yeah. I think, बट कुछ लोगों को अल्लाह, माइकल जॉर्डन को जब मैं देखती हूँ तो मैं बिकॉज यू नो आई हैव सीन हिम प्लेइंग लाइव फॉर द शिकागो, एंड आई यूज्ड टू, माय माउथ यूज्ड टू बी, सर कोई इंसान ये नहीं कर सकता जो वो करता What he था. does, yeah. ओके, और जैसे नुसरत फतेह अली की आवाज़ थी, Yeah. वो कोई नहीं थी. मैडम इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन एंड आई हैव इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट. इन फैक्ट द फर्स्ट लक्स स्टाइल अवार्ड्स, द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वॉज गिवन टू 2 people, मैडम नूरजहां and Nusrat Fateh Ali Khan. There was no. There were many ties in the first, even Vinny and Iraj Vinny won. we didn't separate it. Yeah, huh? yeah. Because it was not possible कि आप एक को दूसरे से जज करें. नहीं कर सकते. मैडम की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है ना, वो ये है कि शी वॉज सच एन एमेंसिपेटेड एम्पावर्ड वुमन. शी लव्ड दिस कंट्री, शी केम दिस साइड. तो मैं इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट तो दे ही नहीं सकती. नंबर 2, she had that naughtiness in her, that spirit. She was always like, you know, her face, her clothing, her style, and the passion for Pakistan. The songs she sang for the army during the war, the naughty songs also. Oh yeah. You know, so I mean the entire Laxal Award 20 साल हमने नूरजहां के गानों पे परफॉर्मेंस चलाई है. What else is what else there? do you have? Yeah. I mean, it's so sad that it's all old stuff that's being recreated. Because the new stuff cannot have those lyrics, that passion, that whole thing was a different era. Not judging again. जो है, अगर rap पसंद है, rap पसंद है, romance पसंद है, romance पसंद है, but there was something, that personality. I think the personality is what made her, and her voice obviously was so iconic, beautiful. But I mean, my God. Okay. All right. Sorry, it was a very long. No, that's fine. I mean, that's what I needed. Okay. Imran Khan and Wasim Akram. You friends Imran with Khan. both? Yeah. Right. Any lovely memory with him? Too many, and I think, again, when I'm talking about spirit, I love Wasim also. Wasim and Shanira, very good friends of mine. But obviously Imran is, you know, I mean, if you think about Pakistan cricket history, there's going to be no one who compares to him, right? You have a lot of personalities, Zaheer Abbas and Asif Iqbal. I'm a huge cricket fan, so for me, all going back, Wasim, Bari, that team, you know, Sarfaraz, Nawaz, all of these guys, and even then the ones that came later, but Imran was older then, he was 42, and I got to know him in 86. So the one thing that always stood out for me was his honesty. And I told him off also one day. I said, you should not be saying these things in front of all these people. Because I just felt he'd get into trouble because of it. But he couldn't help it. And the passion for Pakistan, that was so real. The passion for Pakistan, मैं उस दिन वो देख रही थी ना, उर्तुगुल और कुरलूस उस्मान, वो जो लोग हैं ना, वो मे बी ही बिलोंग्ड इन दैट एरा. वो उस वक्त वहाँ चली जाता ना, तो वो दुनिया छोड़ के उसने मेरे ख्याल में इंग्लैंड तक पहुंच जाना था. बिकॉज ही इज गॉट दैट पर्सनैलिटी, वो जो शेर और ऑनर, और यू नो, दैट्स हाउ आई लुक एट इमरान खान. Okay, all right. Zeenat Aman or Rekha? Oh, that's difficult. So for me, that's very West and So a East. painting of Zeenat in your Zeenat lounge. is very Western. And Rekha is very Eastern to me. So they're very different. Because Zeenat Aman was never that. उसने वो सत्यम शिवयम करी थी, where she was covering and she, you know, but Zeenat was always like, in 1970 she was Miss Asia, Miss India, Miss Asia, and that, from what I remember growing up and seeing her, she was that gorgeous body with that very Western touch, which made her very unique. Rekha on the other side, nah. Okay, so it's Zeenat for you. Zeenat. Okay. They say world is torn between Lata and Asha. Or, is it? Yeah, of course. I mean, the sisters, aren't they?
They are, but world is torn as in like, I mean, there's an Asha camp or there's a Lata camp. Really? Yeah, of course. I belong to Lata camp. So. Me too. Yeah. Hello, Lata. Hello, all the way. Yeah. I think Asha's got all those again naughty songs, Yeah. and she does that kind of stuff too. Yeah. You know, Yeah. I think it's very wrong to. Sort of again. Yeah, You वही can बात always है, have your comparing, preferences. Yeah. But Zeenat, Lata, Imran. Yeah. And I can't choose. That to me, they're two amazing personalities, Yeah. and there's no choices there. Okay. Last one. हाँ. Lux Style की दुनिया या Lux Style Awards? Lakshya ki baby. Duniya. Lux Style की दुनिया? Yeah. I thought you would say Lux Style Awards. No. Oh really? No, because Lakshya ki Duniya did not get adulterated. Can I say that word? Yeah. Okay. I think it was pure. It was groundbreaking in the sense कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उन्होंने फैशन नहीं देखा था उससे पहले, पता भी नहीं था फैशन क्या होता है, मॉडल क्या होती है, डिज़ाइनर कौन होता है, यू अंडरस्टैंड. सो आई थिंक एंड सेलिब्रिटीज़ को उस तरह से इंटरव्यूज़ में कभी नहीं देखा था बिकॉज देयर वर नो मैगजीन शोज़. Correct. I mean, we interviewed Imran Khan, not once, when Shaukat Khanum was being done. So I think we started a huge thing at that point because it was the show that saved PTV. That was the Newsline की headline. And it said कि अगर क्योंकि ये आने वाले थे NTN channels आने छोटे छोटे satellite channels. Early 90s. Early 90s. So it was because of that PTV was नहीं इंडिया के अंदर आ गए थे ना. So people were watching stuff across the border. Okay. और लक्स एक होता था क्या लक्स क्या सीन है, एक शो होता था इंडिया में. तो आई सीन, हाँ एग्जैक्टली, वो मैंने देखा था. तो उससे मुझे आइडिया आया. मैंने कहा अब इसका क्या नाम रखेंगे. एंड मुझे आइडिया आया था कि हमने BBC का एक शो किया था जिसमें आई वाज मॉडलिंग इन इट इन लाहौर फोर्ट. तो मैंने कहा पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है. और क्योंकि मैं लक्स के साथ काम कर रही थी 89 से, तो मैं उनके पास मैंने कहा ये मैगजीन शो बनाते हैं. और फिर असद और मैं उस दिन बात भी कर रहे थे. सो आई टुक द आइडिया, वी डिड अ पायलट एंड दे लव्ड इट एंड दे सेड करो. तो आई थिंक इट्स वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इन माई लाइफ, इन माई करियर, एंड आई थिंक इट वाज अ गेम चेंजर. आई डोंट थिंक लक्स स्टाइल अवार्ड्स वाज अ गेम चेंजर. आई थिंक एंड इट्स क्योंकि उसके मे बी बिकॉज उसके सिर्फ 4 सीजन्स थे, सो इट डिडंट गेट इन adulterated because again when you have a brand and you have a creative you have to keep a balance. So अगर कोक स्टूडियो भी है उसमें भी एक बैलेंस है कि बहुत ज़्यादा अगर आप कोका-कोला का गाना मैं सारे में डालना शुरू कर दूं तो वो तो ख़राब हो जाएगा. So you have to keep the balance and I think you have to keep reinventing. Reinvent. That's the buzzword. Thank you, Friya Altaf. That was Friya Altaf, and I know. I mean, हम अगर बैठेंगे तो शायद शाम भी हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा. But I think मुझे इनकी एक बात है, and I think I'm going to end with that. When I interviewed her for InStep in 2016, when I wrote 13 things I learned from Friya in my 13 years, उस टाइम पे मुझे इतना कुछ टाइम हुआ था उनके साथ. उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे लिए 3 C's बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब कभी इंटरव्यू में यही बातें निकल के आई हैं कि इट्स ऑल अबाउट हर चिल्ड्रन, इट्स ऑल अबाउट हर कंपनी एंड इट्स ऑल अबाउट हर कंट्री. Country, family, company. Yeah.